Hello, check 1, 2, 3. Hello, hello. Hello, hello. Check, check. Hello, mic check 1, 2, 3. Hello, hello, hello. Check, hello. ठीक है। ये सर दूरदर्शन पे है ये सर, वायरलेस है। दूरदर्शन वायरलेस लगाने लगे। दिव्य सज्जनों, आप सबकी सूचना के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का
विज्ञान भवन के इस परिसर में शुभागमन हो चुका है। ग्रुप फोटोग्राफ्स की प्रोसीडिंग चल रही हैं। आप हॉल में जो लोग भी हैं यहाँ पर उपस्थित, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी अपनी अपनी जगह ले लें, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि कुछ ही पलों में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन इस सभागार में इस मंच पर होगा। आप सभी तुरंत अपना स्थान ग्रहण कर लें। संगीत नाटक अकादमी अवार्डीज ग्रुप फोटोग्राफ के बाद यहाँ हॉल में आ रहे हैं। जिनकी जो जगह निर्धारित है उसी स्थान पर वे विराजेंगे। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर नहीं है या स्विच ऑफ नहीं है तो प्लीज़ पुट इट ऑन साइलेंट मोड, ताकि प्रोग्राम की प्रोसीडिंग्स के दौरान उसकी वजह से कोई व्यवधान ना हो, कोई दिक्कत ना आए।
देवीय सज्जनों, माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। और आप सभी से हम निवेदन भी करेंगे कि इसके बाद राष्ट्रगान के लिए भी हम अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। आप सबसे ये प्रार्थना है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार, सुस्वागतम। देवीय सज्जनों, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी पुरस्कार समारोह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी का। ये सचमुच हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से संगीत नाटक अकादमी के अकादमी रत्न और अकादमी पुरस्कार तथा ललित कला अकादमी के अकादमी रत्न और 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार आज यहाँ प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की अध्यक्ष श्रीमती उमा नंदूरी, संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री संयुक्ता मुदगल, सभागार में उपस्थित कला क्षेत्र की सभी विभूतियों और गणमान्य अतिथियों का आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की अध्यक्ष श्रीमती उमा नंदूरी से कि वे आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें अपने स्वागत संबोधन के साथ। Namaskar. Sabhaya Namaha. On the auspicious occasion of Ashtami of Navratri, I take this opportunity to welcome our Honorable Chief Guest, Shri M. Venkaiah Naidu Garu, Vice President of India, and Shri Kishan Reddy Garu, Honorable Minister of Culture, and Madam Mudgal,
who is representing the Secretary Culture. And I also would like to extend my warm welcome to the respected fellows of Sangeet Natak Academy, Lalita Kala Academy, all the award winners and their families, the distinguished dignitaries, all the executive members of the Lalita Kala Academy, art lovers, friends from print and electronic media. You are all most welcome to this occasion of presentation of the awards at Vigyan Bhavan. And India is one of the oldest civilizations and which is still intact, alive and vibrant. And this is all due to our traditions, our culture, our art and lifestyles which we are adopting. And there is a built-in spiritualism in our art forms, and all the aspirations are sublimated to a higher goal, and this is exactly in sync with what Kalidasa said in Kumara Sambhavam, Sarira Madhyam Kaludharma Sadhanam. The human body is the first instrument for treading the path of dharma. Our body is a temple in which our Supreme Lord lives in, and to realize the Lord, there is various sadhanas we have to do, and art and culture plays a pivotal role in realizing our Supreme Soul. And India has got rich traditions and diverse forms of art and culture. There are several dance forms like Bharatanatyam, Kuchipudi, Odissi, Kathak, Mohiniyattam, and also various music traditions like Carnatic music, Hindustani music, folk music, Odissi music, and various theatre forms like street plays, opera, and the plays on the stage, like that. Sangeet Natak Academy is working for building up of a unified support structure for music, dance, and drama. If we trade through little historical perspective of in 1945, the Asiatic Society of Bengal submitted a proposal for creation of National Cultural Trust comprising 3 academies, the Academy of Dance, Drama, and Music, Academy of Letters, and Academy of Art and Architecture. And the Sangeet Natak Academy is one of the pioneer academy which has been established on 28th January 1953 at a special function held in Parliament House by the first president of the country, Dr. Rajendra Prasad. The Academy is conferring the awards to the eminent artists and scholars since 1954, and they are considered to be the most coveted awards in the field of performing arts. And in 2006, an award for the young artist, Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar, has also been institutionalized. And there are legends in our country who received the Sangeet Natak Academy Award. To name a few, M.S. Subbalakshmi ji, Bismillah Khan ji, Pandit Ravisankar ji, Bhupen Hazarika ji, Yamini Krishnamurthy, Raja Reddy, Radha Reddy ji, Ratan Seyaram ji, and so many giants, they have got this award. And this year, we are giving away now the awards of 2018, and for which all the artists are eagerly waiting. We have been delayed in felicitating the awardees due to COVID. There are four fellows and 43 awardees have been announced, out of which some of them could not make it to today because of some unforeseen situations. And Kalyan Sundaram ji is here with us. And I think all of us should clap for him. We should feel proud of you, sir, to have been here. And he is he is being honored with Fellow of Sangeet Natak Academy today. And now let me come to Lalita Kala Academy. Lalita Kala Academy was constituted on 5th August 1954 by the then Education Minister, Shri Maulana Abul Kalam Azad ji, with an object to focus the development in the field of visual arts. The Academy is doing a yeoman service in the field of visual arts through its research, publication of journals, monographs, and conducting camps, exhibitions in our country and across the country, and providing a platform to artists, awarding fellowships to exemplary artists, and conducting the exhibitions across the country. And LKE is doing its job through its regional centers established in Chennai, Kolkata, Lucknow, and Ghadi. I am happy to extend my gratitude to our Honorable Culture Minister. He is the person who has advised us and who has guided us to enhance the number of awards from 15 to 20. So this is a very great contribution, sir, for the art community, and we sincerely extend our gratitude for this. And we are very happy to have Padma Shri Shyam Sharma ji today to receive the honor of Fellow for LKA. Please give a round of big applause to him. And last, I just wanted to say one thing. Artists are capable of healing the world. Bhavabhuti in Uttara Ramacharitam says that न किंचदपि कुर्वाण सौखर दुःखान पोहति ततस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रयोजना.
It means without doing anything, if one converts the sorrow of another person into joy and happiness, then the first one, who is the object of love for the second one, is a valuable thing for the latter. All our award winners are not only special for all of us in the country, and they are also capable of healing the wounds and sorrows and converting them into love. I join everyone in congratulating all the award winners today. With this few introduction, I seek the kind permission of our Honorable Vice President to initiate the award ceremony. Thank you so much. बहुत बहुत आभार श्रीमती उमा नंदूरी जी का। दिव्य सज्जनों, अकादमी पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं और ललित कलाओं के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार संबंधित क्षेत्रों की उन विभूतियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपनी कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि वे पहले संगीत नाटक अकादमी के रत्न सदस्य और अकादमी पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, श्रीमती उमा नंदूरी जी, सुश्री संयुक्ता मुदगल जी और साथ में संगीत नाटक अकादमी की सचिव सुश्री तेमसोनारो जमीर से भी निवेदन है कि वे इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हों। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं अकादमी रत्न यानी अकादमी फेलोशिप से सम्मानित होने वाली विभूतियों को। अकादमी रत्न का पहला सम्मान देवियों सज्जनों प्रदान किया जा रहा है श्री टी.के. कल्याण सुंदरम पिल्लई को। श्री कल्याण सुंदरम पिल्लई को रत्न सदस्य का यह सम्मान भारतीय नृत्य के क्षेत्र में आपके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। श्री टी.के. कल्याण सुंदरम पिल्लई। दिव्य सज्जनों, वर्ष 2018 के अकादमी रत्न सदस्य के रूप में चुनी गई श्रीमती सोनल मानसिंह, श्री जतिन गोस्वामी और श्री जाकिर हुसैन किन्हीं कारणों से इस समारोह में उपस्थित नहीं हो सके हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा ये सम्मान उन विभूतियों को पूरे सम्मान के साथ उन तक पहुंचाया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी प्रत्येक वर्ष प्रदर्शन कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है और इस क्रम में सबसे पहले श्रीमती अल्लमेलू मणि जी को हम आमंत्रित करते हैं इस मंच पर ये सम्मान प्राप्त करने के लिए। संगीत क्षेत्र की विभूतियों के सम्मान के साथ ये शुभारंभ हो रहा है अकादमी पुरस्कारों का। और पहला नाम श्रीमती अल्लमेलू मणि, कर्नाटक शैली में गायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से आपको अलंकृत किया जा रहा है। श्री गणेश राजगोपालन और श्री कुमरेश राजगोपालन। श्री गणेश राजगोपालन व्यक्तिगत कारणों से यहां उपस्थित नहीं हो सके हैं। श्री कुमरेश राजगोपालन ये सम्मान यहां प्राप्त कर रहे हैं। श्री गणेश राजगोपालन और श्री कुमरेश राजगोपालन को कर्नाटक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के अंतर्गत वायलिन वादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संयुक्त रूप से वर्ष 2018 का यह सम्मान प्रदान किया गया। संगीत की अन्य प्रमुख परंपराओं के अंतर्गत वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुरी नट संकीर्तन में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीमती हैसनाम औशंगी देवी को प्रदान किया जा रहा है। अस्वस्थ होने के कारण श्रीमती औशंगी देवी स्वयं यहां उपस्थित नहीं हो सकी हैं। उनकी तरफ से यह पुरस्कार यहां उनकी सुपुत्री थांगसाबम सुशीला देवी प्राप्त कर रही हैं। श्री मधुप मुदगल। श्री मधुप मुदगल को हिंदुस्तानी गायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया जा रहा है। श्री मधुप मुदगल। श्री मल्लादी सूरीबाबू। आंध्र प्रदेश में जन्मे श्री मल्लादी सूरीबाबू को कर्नाटक शैली में गायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री मल्लादी सूरीबाबू।
श्री मणि प्रसाद। महाराष्ट्र के वर्धा में जन्मे श्री मणि प्रसाद को हिंदुस्तानी गायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से अलंकृत किया जा रहा है। श्री मणि प्रसाद। श्री एस कासिम और श्री एस बाबू। मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले श्री एस कासिम और श्री एस बाबू को कर्नाटक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के अंतर्गत नागस्वरम के लिए संयुक्त रूप से वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री एस कासिम और श्री एस बाबू। श्री तरुण भट्टाचार्य। श्री तरुण भट्टाचार्य को संतूर वादक के रूप में हिंदुस्तानी वाद्य संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री तरुण भट्टाचार्य। श्री तरुण भट्टाचार्य। श्री तेजेंद्र नारायण मजुमदार। श्री तेजेंद्र नारायण मजुमदार को सरोद वादक के रूप में हिंदुस्तानी वाद्य संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री तेजेंद्र नारायण मजुमदार। संगीत की अन्य प्रमुख परंपराओं के अंतर्गत सुगम संगीत के लिए श्रीमती शांति हीरानंद को वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था। हमें खेद है कि वे अब इस संसार में नहीं हैं। स्वर्गीय शांति हीरानंद के सुपुत्र श्री निश्चिंत चावला आज ये सम्मान प्राप्त करेंगे। श्री सुरेश ईश्वर वाडेकर। संगीत की अन्य प्रमुख परंपराओं के अंतर्गत सुगम संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री सुरेश ईश्वर वाडेकर को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री सुरेश ईश्वर वाडेकर। देवी सज्जनों, संगीत के बाद अब हम नृत्य विधा में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को आमंत्रित करेंगे, जिन्हें वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए चुना गया है। इस क्रम में सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती अखम लक्ष्मी देवी को। श्रीमती अखम लक्ष्मी देवी को मणिपुरी नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती अखम लक्ष्मी देवी। श्री दीपक मजुमदार। श्री दीपक मजुमदार को समकालीन नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री दीपक मजुमदार। श्रीमती गोपिका वर्मा। श्रीमती गोपिका वर्मा को मोहिनी अट्टम नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से अलंकृत किया जा रहा है। श्रीमती गोपिका वर्मा।
श्रीमती इशिरा पारिक और श्री मौलिक शाह। कथक नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीमती इशिरा पारिक और श्री मौलिक शाह को संयुक्त रूप से वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती इशिरा पारिक और श्री मौलिक शाह। श्री पशुमर्ति रामलिंग शास्त्री। कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री पशुमर्ति रामलिंग शास्त्री को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्री पशुमर्ति रामलिंग शास्त्री। श्रीमती राधा श्रीधर। देवियों सज्जनों, श्रीमती राधा श्रीधर को भरतनाट्यम नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से आज यहां उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से अलंकृत किया जा रहा है। श्रीमती राधा श्रीधर। सुश्री स्वरूपा सेन। ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सुश्री स्वरूपा सेन को वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से अलंकृत किया जा रहा है। सुश्री स्वरूपा सेन। श्री टंकेश्वर हजारिका बोरबॉयन। श्री टंकेश्वर हजारिका बोरबॉयन को सौत्रीय नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्री टंकेश्वर हजारिका बोरबॉयन। श्री तपन कुमार पट्टनायक। श्री तपन कुमार पट्टनायक को सरायकेला छाऊ नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्री तपन कुमार पट्टनायक। नृत्य के बाद अब बारी है रंगमंच से जुड़े पुरस्कारों की और इस क्रम में पहली विभूति हैं श्री A.M. परमेश्वरन चाक्यार। श्री A.M. परमेश्वरन चाक्यार को अदर मेजर ट्रेडिशंस ऑफ थिएटर के अंतर्गत कुटियाट्टम के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्री A.M. परमेश्वरन चाक्यार। श्री भागवत A.S. नंजप्पा। अदर मेजर ट्रेडिशंस ऑफ थिएटर के अंतर्गत यक्षगान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री भागवत A.S. नंजप्पा को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री भागवत A.S. नंजप्पा। श्री लांगलुंग लियाना ख्यांगते। श्री लांगलुंग लियाना ख्यांगते को नाट्य लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री लांगलुंग लियाना ख्यांगते। श्री राजीव नाइक। नाट्य लेखन के क्षेत्र में ही श्री राजीव नाइक को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्री राजीव नाइक।
श्री संजय उपाध्याय। रंगमंच के अंतर्गत निर्देशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री संजय उपाध्याय को वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से अलंकृत किया जा रहा है। श्री संजय उपाध्याय। श्रीमती सुहास जोशी। भारतीय रंगमंच के क्षेत्र में अभिनय के माध्यम से उल्लेखनीय योगदान देने वाली श्रीमती सुहास जोशी को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती सुहास जोशी। श्री स्वपन नंदी। भारतीय रंगमंच में मूका अभिनय यानी माइम के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री स्वपन नंदी को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री स्वपन नंदी। श्री टीकम जोशी। रंगमंच के अंतर्गत अभिनय के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री टीकम जोशी को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्री टीकम जोशी। देवियों सज्जनों, संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कारों का अगला वर्ग ट्रेडिशनल, फोक और ट्राइबल डांस, म्यूजिक, थिएटर और पपेट्री। इसके अंतर्गत पुरस्कृत होने वाली पहली विभूति हैं श्रीमती अनुपमा होसकरे। श्रीमती अनुपमा होसकरे को कर्नाटक की पपेट्री अर्थात पुतुल कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती अनुपमा होसकरे। श्री अर्जुन सिंह धुर्वे। मध्य प्रदेश के लोक तथा जनजातीय नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से अलंकृत किया जा रहा है। श्री अर्जुन सिंह धुर्वे। श्री गाजी खान बरना। राजस्थानी लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री गाजी खान बरना को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्री गाजी खान बरना। श्री हेमचंद्र गोस्वामी। असम के मुखौटा निर्माण कला यानी मास्क मेकिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री हेमचंद्र गोस्वामी को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्री हेमचंद्र गोस्वामी। श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री। देवियों सज्जनों, आंध्र प्रदेश की हरिकथा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पुरस्कार आज यहां उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। श्री कोटा सच्चिदानंद शास्त्री। श्रीमती मालिनी अवस्थी। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीमती मालिनी अवस्थी को वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया जा रहा है। श्रीमती मालिनी अवस्थी।
श्री मोहम्मद सदीक भगत। कश्मीर के लोकनाट्य भान पाथेर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री मोहम्मद सदीक भगत को वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री मोहम्मद सदीक भगत। श्री नरेंद्र सिंह नेगी। उत्तराखंड के लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री नरेंद्र सिंह नेगी को वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री नरेंद्र सिंह नेगी। श्री निरंजन राज्यगुरु। गुजराती लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री निरंजन राज्यगुरु को वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री निरंजन राज्यगुरु। श्री सोमदत्त बट्टू। हिमाचली लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री सोमदत्त बट्टू को वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री सोमदत्त बट्टू। देवी सज्जनों, प्रदर्शन कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में विद्वता या समग्र योगदान के लिए जिन्हें आज पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, अब उन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं। इस वर्ग में पहला नाम है श्री दीवान सिंह बजेली। प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में विद्वतापूर्ण योगदान के लिए श्री दीवान सिंह बजेली को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री दीवान सिंह बजेली। श्री पुरु दधीच। प्रदर्शन कला के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए श्री पुरु दधीच को वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री पुरु दधीच। श्री एस बाबू को आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर। हमारे संगीत के वर्ग में नादोस्वरम के लिए इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यहां सम्मानित किया जा रहा है। श्री एस बाबू। बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। संगीत नाटक अकादमी के रत्न सदस्य पुरस्कार और अकादमी पुरस्कारों के लिए निवेदन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और एक बार संगीत नाटक अकादमी के सभी अवार्डीज के लिए हम मिलकर उनका अभिनंदन करतल ध्वनि के साथ करेंगे, जिन्हें आज ये सम्मान यहाँ प्रदान किया गया है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से। आप सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। देवी सज्जनों, अब मैं निवेदन करूंगा माननीय संस्कृति मंत्री भारत सरकार श्री जी किशन रेड्डी जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। सभी कलाकारों को, उनके परिवारों को, अतिथिगणों को नमस्कार करते हुए, Honorable Chief Guest,
Vice President of India, respected Sri M. Venkaiah Naidu Garu, today's function chief guest, Ministry of Culture officers, chairmen and secretaries of Lalita Kala Akademi and Sangeeta Natak Akademi, and Sangeeta Natak Akademi and Lalita Kala Akademi respected awardees, elders, brothers and sisters. I would like to begin by greeting all the awardees, eminent artists, and the entire arts fraternity. सबसे पहले मैं सभी कलाकारों को मेरे ओर से, भारत सरकार के ओर से आप सब लोगों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं. मैं heartily welcome to you all and thank you for gracing us with your presence. I would like to pay my regards to all the artists for their invaluable contribution to the fields of visual arts, music, dance, theater, and puppetry. Our academies have worked hard to promote the cause of arts by not only organizing national and international festivals and exhibitions, but also encouraging local and folk artists at all regional levels. In this regard, I would also like to inform all the Lalita Kala Academy and increased the awards from 15 to 20 years this year. From this year, not only this year, we want to go next year and onwards, we want to increase 20. My dear friends, you all have not only contributed within the country, but also have played an important role in keeping the flag of Indian tradition and arts flying high globally. We are a country with a civilization which is 5,000 years old. Our culturally rich civilization provides a unique identity and unites the people of our country. Friends, culture and arts are the soul of our Indian community. It has been passed from one generation to another generation. Therefore, it is important for us to protection, preserve, and promotion this ancient culture and arts to ensure that the next generation is able to enjoy it. Today, as we all are celebrating Azad Ki Amrit Mahotsav, India's 75 Independence Day celebrations, we can all look back with pride and see how far we have come in 75-year independence. Among our unsung heroes of the freedom struggle, we also have several artists who fought for the freedom in India. In their own peaceful and creative awareness among the people against British, number of artists, they contributed in the freedom movement also. To name a few, we had Sri Abanindranath Thakur, who painted a Bharat Mata portrait in 1906, to the nation in a manner that a citizen could easily connect to the India and Indianization and against the British and for freedom movement. Nandalal Bose, who sketches of Mahatma Gandhi during his freedom movement and his artworks in a original Indian constitution
from our epics, Vedas, and other sources resonate to the date. D.K. Pattamal, a Carnatic musical classical singer who integrated the songs of great nationalist and poet Sri Subramanya Bharati in her public performance, even though they are banned by the British in Madras state. All these artists used and creative ways to awaken the masses to the causes. Friends, today I request the performing arts and artist community for their support once again. This is an appeal to the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, has made several occasions. You are aware that the youth of this country will determine the direction which our country takes and will set the template for India in its 100-year independence in 2047. The youth will further transform India's fortune. The youth will secure India's future. The youth will India formidable. So I humbly request all the artists, musicians, and dancers make their unique creative forms of art and culture accessible to the younger generation by weaving in important social masses such as Swachh Bharat, Beti Bachao, Beti Padhao, messages in national interest such as Atmanirbhar Bharat, Make in India, Vocal to Local, and Digital India, etc. This will ensure that the youth are more aware of our rich cultural heritage and will play a leading role in further preserving, popularizing, and propagating our nation as having wonderful arts, culture, and heritage to the future generations. Friends, the achievements of New India needs to be assessed both by the race and GDP and our economic strength and also our cultural and creative output. Our magicians, our culture dancers, and all performing artists across the country have contributed significantly to position India as a global soft power. The soft power that India's wields and been generated by Tapasya generation of artists, and this is one of our biggest strengths. Today, it gives for us immense satisfaction to see that our cultural heritage is in a right hands. मैं सबसे आप सब लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, प्रार्थना भी करना चाहता हूं, आपका एक्सपीरियंस से, आपका अनुभव से आने वाले नौजवानों को सही रास्ता दिखाने में, देश के विकास में सभी लोग कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपके कला के द्वारा, आपके आर्टिस्ट के टैलेंट के द्वारा सभी लोगों को आप सही रास्ता दिखाने में मार्गदर्शन करेंगे। मैं इतना ही नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में हम देश को दुनिया के एक विश्व गुरु भारत को लेना चाहते हैं। इसमें भी आप समय समय पर आप लोग भारत सरकार को भी आप लोग आशीर्वाद दीजिए, भारत सरकार को भी आप लोग समर्थन करिए। मैं इस शब्द के साथ टुडे इट गिव्स इमेंस प्लेजर द कल्चरल एक्टिविटीज एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एजेंडा फॉर अस। आने वाले दिन में इस एक्टिविटी को
बजट दृष्टिकोण से और एंकरेजमेंट दृष्टिकोण से हम पूरे आगे ले जाने के लिए हम प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट 2.5 इयर्स कोरोना के कारण कोई काम आर्टिस्टों को नहीं था और कल्चरल एक्टिविटी बहुत बड़ा दृष्टिकोण से हमारा को नुकसान हुआ था। मगर अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया है, आने वाले इस 2022 से लेकर कल्चरल एक्टिविटीज़ को बड़ा पैमाने से आज आगे ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। I thank you all for your participation and congratulate all the awardees. सभी अवार्डीज को मेरा ओर से फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कल्चर डिपार्टमेंट आपका है, कभी भी आपका जो भी समस्या है, जो भी सुझाव है, कभी भी आप लोग दे सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है भारत सरकार के ऊपर। मैं फिर एक बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी रेस्पेक्टेड वेंकैया नायडू जी को इस कार्यक्रम में समय देकर जो आप सब लोगों से मिलके जो अवार्ड देने में योगदान दिया है, समय दिया है, मैं आप सब लोगों के ओर से भी आदरणीय उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय संस्कृति मंत्री भारत सरकार श्री जी किशन रेड्डी जी का। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और आपके प्रयासों से कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और उसका स्पंदन, उसका वाइब्रेशन हम सब महसूस करते हैं। देवी सज्जनों, अब समय है ललित कला अकादमी द्वारा दिए जाने वाले अकादमी रत्न और 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार विजेताओं को अलंकृत और सम्मानित किए जाने का। मैं निवेदन करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कि वे अपने कर कमलों से ये सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। श्री जी किशन रेड्डी जी और मंच पर विराजमान विभूतियां भी यहाँ उपस्थित होंगी। इस अवसर पर ललित कला अकादमी के सचिव श्री रामकृष्ण वेडाला से भी निवेदन है कि वे भी इस अवसर पर मंच पर पधारें। सम्मानित होने वालों में सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं ललित कला अकादमी के अकादमी फेलो अर्थात अकादमी रत्न से अलंकृत किए जाने वाले विभूतियों को। प्रथम नाम श्री हिम्मत शाह। अस्वस्थता के कारण श्री हिम्मत शाह स्वयं यहां उपस्थित नहीं हो सके हैं। उनकी तरफ से ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे उनकी प्रतिनिधि जी.आर. एरन्ना, श्री जी.आर. एरन्ना। गुजरात के लोथल में जन्मे श्री हिम्मत शाह का मूर्तिकला के क्षेत्र में बहुत विशिष्ट योगदान है, जिसके लिए उन्हें ललित कला अकादमी के फेलो से सम्मानित किया जा रहा है। श्री ज्योति भट्ट ये भी अस्वस्थता की वजह से यहां उपस्थित नहीं हो सके हैं। उनकी तरफ से डॉक्टर शुभा चौधरी ये सम्मान यहां प्राप्त करेंगी। गुजरात के भावनगर में जन्मे श्री ज्योति भट्ट कंटेम्पररी इंडियन आर्ट के क्षेत्र की प्रख्यात विभूति हैं। इस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ललित कला अकादमी के रत्न सदस्य के रूप में उन्हें चुना गया है। श्री श्याम शर्मा। गोवर्धन मथुरा में जन्मे श्री श्याम शर्मा का प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में अति विशिष्ट योगदान है, जिसके लिए आपको ललित कला अकादमी द्वारा अकादमी के फेलो यानी रत्न सदस्य के रूप में चुना गया है। श्री श्याम शर्मा। देवी सज्जनों, अब हम आमंत्रित करेंगे 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार विजेताओं को और इस क्रम में पहला नाम है श्री आनंद नारायण डबली। महाराष्ट्र में जन्मे श्री आनंद नारायण डबली को चित्रकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और प्रदर्शन के लिए 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री आनंद नारायण डबली। श्री भोला कुमार। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मूर्ति कला में बैचलर और मास्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले श्री भोला कुमार को इस क्षेत्र में उनके योगदान और प्रदर्शन के लिए 62वीं
राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री भोला कुमार। श्री देवेश उपाध्याय। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्मे श्री देवेश उपाध्याय को मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और प्रदर्शन के लिए 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री देवेश उपाध्याय। श्री दिग्विजय खटुआ। चित्रकला यानी पेंटिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और प्रदर्शन करने वाले श्री दिग्विजय खटुआ को 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार से यहां सम्मानित किया जा रहा है। श्री दिग्विजय खटुआ। श्री घनश्याम कहार। फोटोग्राफी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और प्रदर्शन करने वाले श्री घनश्याम कहार को 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री घनश्याम कहार। श्री जगन मोहन पेनुगंटी। मूर्तिकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और प्रदर्शन करने वाले श्री जगन मोहन पेनुगंटी को 62वां राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार आज यहां प्रदान किया जा रहा है। श्री जगन मोहन पेनुगंटी। श्री जिंतु मोहन कलिता। छापा कला यानी प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और प्रदर्शन करने वाले श्री जिंतु मोहन कलिता को 62वां राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार आज यहां प्रदान किया जा रहा है। श्री जिंतु मोहन कलिता। श्रीमती कुसुम पांडे। हल्द्वानी उत्तराखंड में जन्मी श्रीमती कुसुम पांडे को छापा कला यानी प्रिंट मेकिंग में उल्लेखनीय योगदान और प्रदर्शन के लिए 62वां राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती कुसुम पांडे। सुश्री लक्ष्मी प्रिया पाणिग्रही। ओडिशा में जन्मे सुश्री लक्ष्मी प्रिया पाणिग्रही को चित्रकला यानी पेंटिंग में उल्लेखनीय योगदान और प्रदर्शन के लिए 62वां राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। सुश्री लक्ष्मी प्रिया पाणिग्रही। श्री मंजुनाथ होन्नापुरा। होन्नापुरा कर्नाटका में जन्मे श्री मंजुनाथ को मिक्स्ड मीडिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और प्रदर्शन के लिए 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री मंजुनाथ होन्नापुरा। श्री मोहन भोया। श्री मोहन भोया को मूर्तिकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और प्रदर्शन के लिए 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री मोहन भोया। श्री नेमाराम जांगिड़। राजस्थान में जन्मे श्री नेमाराम जांगिड़ को मूर्तिकला में उल्लेखनीय योगदान और प्रदर्शन के लिए 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री नेमाराम जांगिड़। श्रीमती निशा चड्ढा। श्रीमती निशा चड्ढा को छापा कला यानी प्रिंट मेकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान के लिए 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती निशा चड्ढा। श्री प्रभु हरसूर। गुलबर्गा कर्नाटका में जन्मे श्री प्रभु हरसूर को चित्रकला यानी पेंटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान के लिए 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रभु हरसूर। श्री प्रेम कुमार सिंह। मध्य प्रदेश में जन्मे श्री प्रेम कुमार सिंह को पेंटिंग यानी चित्रकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान के लिए
62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रेम कुमार सिंह, श्री प्रीतम माइती। हासिम नगर पश्चिम बंगाल में जन्मे श्री प्रीतम माइती को मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रीतम माइती। श्री ऋषिराज तोमर, दिल्ली में जन्मे श्री ऋषिराज तोमर को पेंटिंग यानी चित्रकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री ऋषिराज तोमर। श्री S.A. विमलनाथन, कर्नाटका में जन्मे श्री S.A. विमलनाथन को छापा कला यानी प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 62वें नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्री S.A. विमलनाथन। श्री शिवानंद शागोटी, श्री शिवानंद शागोटी को पेंटिंग यानी चित्रकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री शिवानंद शागोटी। श्री सुनील कुमार सिंह कुशवाहा, श्री सुनील कुमार सिंह कुशवाहा को पेंटिंग यानी चित्रकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री सुनील कुमार सिंह कुशवाहा। बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। और देवीय सज्जनों, अब ये अवसर है जब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आशीर्वचन, उनका मार्गदर्शन भी हम सबको प्राप्त हो। निवेदन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कि उनके प्रेरक संबोधन के लिए पधारें। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्री श्री किशन रेड्डी जी, संगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्रीमती उमा नंडूरी जी, संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री संयुक्ता मृदुला जी, श्री रामकृष्ण जी, आज इस पुरस्कारों से सम्मानित कला विभूतियों तथा आपके सम्मानीय परिजन, गणमान्य अतिथिगण तथा इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े माननीय अतिथिगण और प्रिय बहनों और भाइयों, मैं मन में बहुत प्रसन्न हूँ इस कार्यक्रम में भाग लेने का और आप सबसे मिलने का, आपको सम्मान प्रदान करने का अवसर मिला है। This program could not be held as explained earlier because of the COVID situation. And doing it online, virtual, is different from doing actual, because virtual is virtual, actual is actual. Though virtual in between has become a factual, but it will not give you that satisfaction of actual. So even though it is delayed, though we are all feeling happy to participate in this program. संगीत, नृत्य, नाटक के क्षेत्र में विख्यात विभूतियों का सम्मान करके स्वयं को सम्मानित हुआ अनुभव कर रहा हूँ। संगीत नाटक अकादमी के बारे में बता दिया है। 1954 में
इन राष्ट्रपति सम्मानों का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के साथ जोड़ दिया गया है। शुरुआत में तो सिर्फ 4 पुरस्कार ही हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले कलाकारों को दिया जाते थे। समय के साथ देश में कला और संस्कृति के क्षेत्र में नया आयाम विकसित हुए हैं। इन क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले सार्थक कलाकारों का सम्मान करने के लिए पुरस्कारों का श्रेणियों में भी वृद्धि की गई है। अभी अभी मंत्री जी बता रहे और कुछ सम्मान इसके साथ जोड़ देंगे। देश बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, इसलिए हमारा देश में अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कला, उसमें प्रावीण्यता हासिल करने वाले संख्या ज़्यादा है। इसलिए जितना संभव है तो उतना लोगों को पुरस्कार देना चाहिए। ये बढ़ती संख्या को देख के मेरा मन में प्रसन्नता हो रही। ललित कला अकादमी की जनरल काउंसिल ने इस वर्ष की पुरस्कारों की संख्या को 15 से बढ़ाकर 20 करने का निर्णय लिया है। My dear friends, artists devote their entire life to perfecting their craft, and therefore it is important to recognize, respect, honor their artistic endeavors. Awarding excellence helps set a benchmark for other upcoming artists and helps in promotion and restoration of those great art forms. Earning recognition of such eminence like Sangeet Nataka Akademi, Lalita Kala Akademi Awards not only lends a big boost to these outstanding practitioners of various art forms, but encourages them as also others to excel in their respective fields. This felicitation is to give motivation to others. These awards or rewards, whatever you may call, is to give inspiration to others to follow these great people and achieve excellence in their chosen fields. I'm told, in addition to the awards, there will be 4 fellowships this year that will cover a wide spectrum of activities in the sphere of music, dance, and theatre, including classical and folk traditions from all over the country. While the majority of the awards have gone to the performing arts, we have a fair number of scholars here who have contributed to our outstanding of arts and through their research and writings. They are also teachers and institutional builders who have served as stepping stones in enabling the transmission of these arts to the new generation. I would like to congratulate all of you for the splendid efforts in promoting various art forms. Our artists have strengthened the thread of continuity, connecting our rich past in all its glory to the present and to the future. It is the duty of each one of us to preserve, promote, propagate our grand cultural traditions and various art forms. India's rich tradition of folklore is one area that needs our immediate attention and call for urgent action. With the passage of time, various forms of folk traditions have been on decline. They should be arrested. The onus is upon all of us to make every effort to preserve our great folk traditions. Dear sisters and brothers, you are all aware we are not simply remembering them. We are celebrating the Azadi Ka Amrita Mahotsav
to commemorate the 75th glorious years of India's independence. The Mahotsav celebrates India's rich culture, its people, and their achievements and contribution to the growth of the nation. There are a series of festivals that are being organized across the country to celebrate India's evolutionary journey. The festival is also honoring our freedom fighters, without whose efforts and sacrifices we would not have achieved independence. So, my dear friends, as we celebrate our national icons, there is a need to recognize the contribution of the many unsung heroes who were very popular in their respective regions and whose countless acts of courage made the British tremble. This is very much necessary. All institutions, all governments at various levels, they should all really bring about and organize programs about the unsung heroes. I am very happy that in the recent past, under the leadership of the Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, most of the unsung heroes and heroines, they are being recognized and they are given Padma Awards. Recognizing the unrecognized. That is our duty of the country, of the government, and the society as a whole. Many people have made contribution in their chosen fields, in their own way. They made sacrifices, great sacrifices, but unfortunately, influenced by the colonial mindset, British Raj, their rule, our textbooks, our history has not given proper enough importance to these unsung heroes. It is time to rectify. I'm happy the new education policy is focusing in that direction. We were told about the history of Robert Clive, Alexander, but not about Rana Pratap, about Chhatrapati Shivaji Maharaj, not about Veerapandya Kattabomman, not about Alluri Sitaramarazu, not about Komaram Bhim. Enough focus has not been made. It is time that we correct this distortion and restore the honor to our glorious past and also bring back the life, teachings, preachings, sacrifices of these great heroes and heroines. I'm happy. Some of the newspapers are carrying the life and sacrifices of these great people during this Azadi Ka Amrita Mahotsav. I hail from Telugu state, and every day I read life about one unsung hero or unsung heroine in Enadu newspaper. I hope many of the newspapers across the country are following the same or urge upon them to follow the same. They must bring about the life, stories and preaching sacrifices of these great people so that the younger generation, they will be inspired. Our cinema, our other art forms, our music, our literature should pay enough attention to this aspect. It is very much important to regenerate our great cultural past and the sacrifices made by our people. This is very important. It should not be left to the government alone. Government has to do it. They are doing. But every one of us in our chosen fields, when we speak and we write, we should recollect at least one person, their life and their contribution. It should be our way forward. Art, culture, music, drama, they have a great effect on the minds of the people. They give people happiness. They give peace. They give you so much solace, inspiration. These various forms of art and various
performing arts, they give you satisfaction. During my childhood, I remember we used to see in our villages those days puppet show, Tolu Bommalata. Slowly those things are being allowed to be forgotten in our craze to the Western culture, Westernization. It's not going to get you anything good for you and to the country. These arts, beautiful. And if the beauty is combined with the duty, it will make you mighty. This has to be understood by all. It is not a mere source of entertainment. It's a powerful weapon to communicate your thoughts, the message to the younger generation. You recall the art became a powerful political weapon during the British to arouse the patriotic fervor among our people. Through the medium of art, stories of British oppression were conveyed in a powerful manner at that time. Music too had a significant role to play in India's fight for independence. Fiery patriotic songs and poems of Rabindranath Tagore, Subramanya Bharati, Qazi Nazrul Islam, and several others inspired the masses and aroused strong feelings of nationalism. Vande Mataram, from Bankim Chandra Chatterjee's political novel Anandamath, became the battle cry of freedom fighters as they willingly laid down their lives for their country. Swadeshi movement also impacted the world of art and galvanized our writers, thinkers, performers, and artists against the British. Kala Bhavan, the art school at Shantiniketan, played a remarkable role in reviving the crafts of India and inspiring socially relevant public art. Their contribution, our freedom fighters and organizations through powerful artistic expression, is integral to our freedom struggle and must not be allowed to be forgotten. Art enriches life. It brings a meaning to the life, widens our intellectual frontiers, and is truly the backbone of our cultural advanced society. We in India have a grand tradition of highly refined art, backed by theories and forms mentioned in our ancient texts. Encyclopedic treatises like the 2nd century Natya Shastra continue to influence the performing arts in contemporary India. It should be promoted further. Reference to instrumental and vocal music around the Vedic literature, while the Silpa Shastra point to a long, unbroken tradition of visual and plastic arts. Practitioners of these arts find themselves going back to these texts even today. Visual and performing arts are intertwined with the intangible cultural heritage of our nation. They must be preserved as they shape our national identity. Friends, the language of art is universal. It has no frontiers. It unites people across the cultures, influences, and inspires them, thus becoming a powerful agent of change in the process. One important lesson we take back today is that a journey back to the roots of India's past. Let us go back to our roots, to our culture, to our heritage. Let us recall, remember the great contribution and traditions and practices set by our forefathers. So, journey back to the roots of the country is the need of the hour. It will be very useful in redefining the present and future. In the words of Ananda Kumara Swami, quote,
Art contains in itself the deepest principles of life, the trust guide to the greatest art, truest, the art of living. The true life in idea of Indian culture is itself unity, and art become, if art become parts of it, it gives you a lot of inspiration. By one ruling passion, the desire to realize a spiritual inheritance. All things in India have been valued in the light of this desire. Let us enrich our lives by learning, appreciating, and promoting various art forms around us. I would like to appeal to education institutions at all levels to give equal importance to art subjects in their curriculum. It is very much necessary. I also urge upon the parents to encourage their children to learn any art form they are inclined towards. This is very much required. This is our life. And this cultural renaissance must take place. Every home, every parent must insist that their children learn some art. This exposure to creativity and art at an early age will help children become more aware of their surroundings and help them lead a more meaningful life. We must move towards our culture with passion that will be useful for the nation. Government, various institutions, and all of us must promote this passion. It should not become a fashion. Passion, urge, desire to do something creative, to pass on to the society, which will help in bringing peace, tolerance, social desire to help each other. Because peace is the prerequisite for progress. If you have tension, you cannot pay attention and have the retention. And you'll be doing only pretension. So we should see to it that this tension is reduced. One easiest way is music. Easiest way is art. Easiest way is painting. Easiest way is writing to create peace among the society. We Bharatiyas, we believe in Vasudaika Kutumbakam. Sarve jana sukhino bhavantu. That passion has to be aroused among the children. Every one of us teach, preach, and also try to serve the others, the needy. That is Indian culture. Indian culture is very old, our civilization. Egypt, Rome, Athens, and many others, of course, are also old. But where are those cultures, those civilizations compared to our India? Because India's civilization is eternal, and we should all promote that culture and practice in our life, helping the needy, taking care of others. That should be part of our life. Then only it will have meaning, giving back to society. Some children, they want to go abroad. I tell them, go, learn, earn, and return. Return back to serve the society. Whatever we may gain in life, we should see to it that our place is also really helped. So I urge upon the younger generation to focus more on your mother tongue. Mother tongue. Respect mother. Mother includes father also.
mother, the parents who has given you this beautiful birth. Remember, do something back to your Janma Bhumi, the place where you were born. Third, remember the mother tongue, the language that has come from mother's womb. Beautiful language. We are all now being influenced by this this thing. We must learn other languages. Before other languages, first learn your language. Mother tongue. Mother tongue is beautiful. Mother tongue is like your eyesight. Foreign language is like your spectacles. If you have eyesight, spectacles will work. If you don't have eyesight, you will not get foresight, but even the actual sight. So we should promote first our mother tongue and learn as many languages as possible, no problem, no barrier. Even if you want to learn English also, no problem. But first, your mother tongue. The moment mother tongue disappears, your culture, your arts, your music, your dance, everything goes. Try to understand this. Try to understand this. Learning a language, nothing wrong. But learning the subject, first you have to, in other language, you have to learn the language and then learn the subject. Whereas in your mother tongue, directly go to the subject. Understand this, that is the difference. In the mother tongue, that's why I always feel up to at least high school, one must be taught in mother tongue. Then other languages. Even our government functioning at all levels should be first in mother tongue. The gadget orders, people do not know English in the village and you give gadget notification, government order, give it in the mother tongue. And if you want to give copies in other languages, no problem. First, people's language. People's language should be medium of instruction. People's language should be administrative language. People's language should be language in education. People's language should be language in courts. Court also, the advocate, what he is arguing, the client do not know. So what is the difficulty? Is it a great, difficult task? No. And moreover, with the advancement of technology, where you can have simultaneous translation, this could be done and this should be done. It is our duty. The Culture Ministry should promote this. In Parliament, after I became chairman of Rajya Sabha, I tried to improve upon the system. Now, out of 22 languages, you can speak in any language, there will be translation. Similar things should be organized in every walk of life so that our language, our culture, our heritage is preserved. That's why I always say, mana kattu, mana bottu, mana mata, mana aata, mana paata, mana bata. Ivanni kuda mana bhashalo undali. All other things should be in our language, in our tradition. Feel proud. Some people feel, sir, you are going out and you are meeting others, you must dress up to the occasion. I said, what is the occasion? Occasion is you are meeting a foreigner, okay? You need not become foreigner. Meet and greet in our own way, in our own dress. After I became vice president, some people asked me, sir, press people. You know, press people always, they want some juicy stories. They asked me, sir, now you have become vice president. I said, yes, I have become vice president. They were hesitant to ask. I said, what is the question? Ask me. Sir, what about the dress? I understood. I said, no change of dress, only change of address. That's all. Dress will be the same. The Prime Minister attended United Nations and addressed in Hindi. There was translation. I attended NAM conference, non-aligned meet conference. I went with the same dress and made the address. People were happy. They recognized India. India is standing here. India is... I don't find any difficulty, except when the weather is difficult, and even in India also we change our dress sometimes. And our Bharatanatyam.
our Kuchipudi, our Kathak, and other forms of dance. They are being staged in various embassies across the globe. People are very keenly watching. They want to learn Bharatanatyam. They want to learn Kuchipudi. They want to learn our other forms of art, music, and dance. We are hesitating. We are hesitating, as I told you, because of that mindset of the colonial past and the books that were made to be read by us. Now let us change and get back to our society. And as I told you, exposure to creativity and art at early age will help children become more aware. And we must also promote through culture, creativity, promote the feeling among the people to respect the nature. Nature, culture, together for better future. That should be our motto. I hope that the Culture Ministry will focus. They have taken up a lot of initiatives after Sri Kishan Reddy became minister. He is making it more dynamic. I hope that it will move in a more meaningful direction in the future. And my best wishes to all the awardees, and also my best wishes for the future awardees also, so that they can aim high, dream high, but work hard. Simply aiming high and dreaming high will not take to the height. So work hard. That is my advice to the younger artists in various fields. God bless you all. Nandri, Vanakkam. बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। इस विशाल देश की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने की दृष्टि और प्रयासों को आपके स्नेह से बहुत बल मिलता है। देश की भाषाओं, कला, संस्कृति, साहित्य के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा है और ये हम सब के लिए प्रेरणा का विषय होता है। मैं निवेदन करूंगा माननीय संस्कृति मंत्री भारत सरकार श्री जी किशन रेड्डी जी से कि वे आज के इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को संस्कृति मंत्रालय की ओर से स्मृति चिन्ह के रूप में एक पेंटिंग भेंट करेंगे। देवियों सज्जनों, हमारे ललित कला अकादमी के बहुत ही रेयर इनवैल्यूएबल कलेक्शंस में से एक ये पेंटिंग है और सुरेश वाघमोरे जी बहुत ही प्रख्यात पेंटर हैं जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है और ये हमारे कलेक्शंस का ही हिस्सा है। ललित कला अकादमी को बहुत गर्व होता है कि उसके पास बहुत रेयर इनवैल्यूएबल कलेक्शंस हैं और उसी में से ये कलेक्शन एक भेंट के रूप में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है, आभार के रूप में, अभिनंदन के रूप में। हम सबके लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसी विभूति का आज आगमन हम सबके बीच में हुआ है और उनके करकमलों से ये सम्मान भी प्रदान किया गया है। और कार्यक्रम के अंतिम चरण में देवियों सज्जनों, आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होते हैं राष्ट्रगान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का, श्री एम वेंकैया नायडू जी का बहुत बहुत आभार, उनकी कृपा, उनके स्नेह, उनके मार्गदर्शन, उनकी उपस्थिति के लिए और साथ ही इस बात के लिए कि आज उन्होंने
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी के पुरस्कार वितरण समारोह में अपने करकमलों से ये पुरस्कार, ये सम्मान प्रदान किया है। माननीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का भी बहुत बहुत आभार। संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्रीमती उमानंदूरी जी, संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री संयुक्ता मुदगल जी, सभी अधिकारियों का, अतिथियों का आभार और पुनः आप सभी को बधाई जिन्हें आज संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी का ये सम्मान मिला है। आप सब हम सब के लिए प्रेरणा हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। आप सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। निवेदन आपसे है, भोजन का प्रबंध है, लंच की व्यवस्था है और आप सभी लंच के लिए पधारेंगे और लंच के बाद ही हम सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक बार पुनः संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत सारी मंगल कामनाएं आप सबके लिए। धन्यवाद आप सभी का।